So, welcome to all of you in the second day of the FDP of cybersecurity. Okay. So, today's session is all about cybersecurity. Okay. So, what we will going to cover in this session. So, according to the course content of the FDP program, we are going to cover introduction to cybersecurity and introduction to ethical hacking, and we will discuss what is ethical hacking in real. Is hacking is ethical or not? So we will going to discuss this, and in the next session we will going to discuss cyber laws and forensics. Okay, and the short topic, introduction to digital virtualization, that is all about VirtualBox or VMware installation in your Windows or Mac machine. Okay, and the last session is session of interaction. So if you people have any query, any doubt regarding both the session, you can ask me freely. Okay, so without any delay, just move to our presentation. So, what is cyber security? Okay. What is cyber security? So, there is a course outline. We'll cover definition, then why cybersecurity is important in every aspect. Uh, we will discuss about some major breaches happen in past years and types of cyber threats, then dangerous cyber security myths, okay, and cyber security goals, and most important, that is CIA tried, and some safety tips. Okay. So let's start with the 4 points. So why are we here? Okay. So if we all are here and we all are join this FDP program in cybersecurity, so we the people have awareness about the security, cybersecurity. Okay. So now in this program, we will discuss about every aspect of cybersecurity, or every aspect of ethical hacking. Okay, so so what is HTTPS? What is encryption, antiviruses, firewalls, physical security, cameras? Okay, so what is HTTPS? HTTPS, basically we all are knows about HTTPS is hypertext transfer protocol secure. So if we are going to purchase anything from any e-commerce website, or we are going to pay any kind of payment on any website, then we have to check whether this website is secure or not. So that security is called HTTPS. Okay, and basically, if we are discussing in technical terms, that is called transport layer security. So if I just click on any website, suppose estcindia.com, here you can see there is a padlock, there is a lock, and it is a padlock. Okay, so this lock ensure me that this website is secure, secure enough to make payment on this website. Okay, and you can see Amazon.com. So there is another.
and if you want to pay on that website, so first of all you have to check that is a padlock over here. Okay, so that is the clear symbol of HTTPS, mean to say कि hypertext transfer protocol secure. So okay, now encryption. What is encryption? So basically we can say encryption is a kind of transformation. Okay, uh, if anything is simple, everyone can read it, everyone can tear it, or everyone can access it. Okay, so what is encryption? Encryption is basically transformation of anything into one form to another. Okay, but in technical words we can say encryption is a method that in encryption uh, we can in encryption we uh, we can transform our information into any random scrambled code. Okay, so that is called encryption. So suppose if you log into your gmail uh, gmail id. Okay, so there are enough information, and there are enough information, or you can say you can log in into a Facebook account or any website. Okay, so your information on that website is not in the simple text. That information is stored on that website in the encrypted form. Okay, so that is called encryption. Basically encryption, in simple terms, we can say encryption is the form of transformation of your information into one form to another, anything. Okay, antiviruses. And what are the antiviruses? Firewalls. So antiviruses are the software programs that helps you to prevent your system from the viruses. Okay, same firewalls. Firewalls are the software and the hardware, or we can say combination of both, that uh, prevent your system from unwanted traffic. Okay. Physical security, okay, camera security, security guards, and these four points are important to secure your system. Encryption is as important as HTTPS, and antivirus as firewalls as important as physical security, camera security guards. Okay, सपोज आपने अपनी इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्शन के थ्रू ठीक है सिंपल टेक्स्ट से में ना रखकर एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में रख दिया. ओके, एक स्क्रैम्बल्ड कोड में रख दिया. बट अगर कोई पर्सन डायरेक्ट आपके सर्वर रूम में आता है, या कोई पर्सन डायरेक्ट आपके उस हार्ड ड्राइव को एक्सेस कर लेता है, देन व्हाट यू विल डू? सो फिजिकल सिक्योरिटी इज एज much as important as all of these security terms. Okay, so we will discuss these all terms in details in our offline sessions. Okay, so these why are we here? So these are the security aspect of security system. Now, what is cyber security? So cyber security terms. What is cyber security? Cyber security is made with two terms. First one is cyber, then is security. We all know what is security. To us, to protect something from others, to protect something from attackers, to protect something from thieves. That is called security in general terms. What is cyber? So what is the term cyber? Cyber. So in very basics, we can say there is a computer, there is a network, there is a internet, then that comes a cyberspace. If there is a computer, there is a mobile network, there is a mobile system, there is a internet network, there is a internal network, then all the things becomes a cyberspace. So you can say
everything which is connected in a network called, that thing is in cyberspace. Okay, so now that term is cyber security. So now it is very clear we are here to protect our information in this cyber world from the attackers, or we can say from the hackers. Okay, so cyber security is the practice of defending computers, servers, mobile devices, okay, electronic system, networks and data from malicious attacks. Okay, so cybersecurity is a practice of defending your devices, defending your information. Okay. So, in short, we can say cybersecurity is the protection of interconnected system. Okay, interconnected system including hardware, obvious hardware, software, and data from the cyber attacks. Okay, it is also known as information technology security or electronic information security. That is very clear. If the information is saved in electronic form, that is called electronic information security. So the term applies in variety of contexts from business to mobile computing and can be divided into few common categories. Okay. So what are the categories? So here, these are the categories. So network security, what is application security, what is information security, ऑपरेशनल सिक्योरिटी. ऑब्वियस, ये ऑब्वियस है. इनके फर्स्ट टर्म को आप देखकर आइडिया लगा लेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स इट इज ऑल अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ अ नेटवर्क, वेदर इट इज योर इंटरनल नेटवर्क, वेदर इट इज योर एक्सटर्नल नेटवर्क. ओके, network security is the practice of securing a computer network from intruders, whether targeted attackers or opportunistic malware. So here's a very basic, very simple example of your local Wi-Fi router. Okay, हम सबके घर में आजकल Wi-Fi routers हैं. So that is in the network security. So हम क्या कर रहे हैं कि उसमें we put a very strong Wi-Fi password over there. So network security is the practice of securing your computer network from unwanted person, or we can say intruders, whether target attackers or opportunistic malware. So कोई भी हो सकता है, वो एक बॉट भी हो सकता है जो आपके सिस्टम को अटैक कर रहा है. Okay. Now next term is application security. So whether it is name suggests, application mean to say that is all about the apps or software. Okay, focusing on keeping software and devices free of threats. Okay, a compromised application could provide access to the data it designed to protect. Successful security begins in the design stages. Mean to say, if any bugs occur in any software, that will harm your internal or external network also. Okay, so if you install any compromised software in your computer system, that will harm your computer, that will harm your system and steal all of your information, and that is comes under the application security, because that bugs in that software, not in your system, but if you install that software in your system, that the attacker have access to your system and compromised your system. Okay, so these comes under application security. Okay, information security protects the integrity and privacy of data, both in storage and in transit. So that is very important in every organization. Information security protects the integrity and privacy of data. What is the integrity? Integrity means that your information should not be altered or modified. Okay, so everyone wants that secret to be secrets. Okay. So that is called information security. Operational security. Operational security means
includes the process and decision for handling the protecting data assets. Okay. Okay. The permission users have when access a network and the procedure that determine how and where data may be stored or shall shared all fall under this umbrella. Okay. So now we have some idea why cybersecurity is important. Okay. So with an increasing number of user devices and program in the modern enterprises combined with the increased deluge of data. Okay. So from the past 2 years, the increasing of increasing there is a increasing in number of computer system, number of internet users in the cyber world. So cyber security is very important because every user have some data, and nowadays data is very important. Okay, you can't say that that he's a 16-year-old boy and he has only one Facebook account or one Gmail account, so that data is not important. No, because nowadays data is uh, collection of data becomes a business model. So uh, if number of users, please mute your mic. Okay, so where we are, uh, data. So data is very important in this present world. Right? So if data is important, then the security, then the protection of data is very important. Okay, whether it is your raw data, whether it is your process data, whether it is your information. So if data is in अगर आपके पास बहुत डेटा है, देन यू कैन से कि आपको सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस डेटा की. सो साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू कैन से लास्ट 2 years से जो साइबर अटैक्स हैं in India or even the world has increased. So cyber security is very important, and the growing volume and sophistication of cyber attackers and attacks technique compound the problem even further. So now we will discuss some breach. Okay, and the eye openers. Okay, first one is Yahoo breach. Okay, basically there are number of breaches happens in past years, but I'm going to discuss here few of them. Okay, so Yahoo breach. So we all know what is Yahoo. Yahoo is a web, even you can say web portal, or you can say a search engine or a website. Okay, Yahoo provides a mail service also. Okay. A breach occurring earlier around 2013 was reported in 2016. Initially believed to have affected over 1 billion user account. Okay. You can't imagine 1 billion user accounts have compromised in this attack. Okay. So even Yahoo later affirmed in October 17 that all 3 billions of user accounts were impacted. Mean to say कि 2013 में अटैक हो रहा है और 2014 में याहू को पता लग रहा है कि हाँ हमारे 1 बिलियन के साथ 3 बिलियंस का डेटा और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ है. इट मीन्स it impacts a lots of users of Yahoo, or you can say a lots of internet users, because at that time mostly people used Yahoo rather than Gmail. Okay, so both breaches. So or I or in that breach, the secret information is like the user's name, user's full name, user's address, user's date of birth, user's in somehow user's credit card data. Okay, both breaches are considered the largest discovered in the history of internet. Okay, and
in the last point, you can see personal information including names, email, hash, even hash passwords. Okay, so whether your data is encrypted, it will be compromised. Okay, so that is Yahoo breaches. Okay. WannaCry ransomware. WannaCry. So there is a new term introduced in cyber world, ransomware, in 2017. So WannaCry is a ransomware worm that spread rapidly through across a number of computer networks in May of 2017. And here I can say I was a victim of WannaCry ransomware. So I was one of them. Okay, in 2017. After infecting a Windows computer, it encrypts files on the PC hard drive, making them impossible for users to access. Mean to say, it easily convert your file extension into any random extension. That after that, you cannot access your file, whether it is your doc file, whether it is your Excel file, whether it is your MP3 or music file. So okay, then demands a ransom payment in Bitcoin order to decrypt them. Okay, it's a basic concept, it behind the basic concept of ransomware. First of all, they send you a worm or anything that encrypt your all of your information into any random scrambled extension. Then they demand you a huge amount in Bitcoin to decrypt that information. Okay. In India, ransomware affected several bodies, including 120 computers of the Gujarat government and 10 machines of the Tirumala Tirupati Devasthan temple. ओके, इन 2017 ये हमारे साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी हमारे मेन सिस्टम था उसके साथ भी रैंसमवेयर अटैक हुआ. सो एट द टाइम हमारे जो इंफॉर्मेशन थी कंप्यूटर सिस्टम में वो रैंडमली एक एक्सटेंशन था .CERBER. Nowadays it is very common, but at that time ये हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, हमारी जितनी भी फाइल्स थी उस कंप्यूटर में वो कन्वर्ट हो गई .CERBER. और एक या दो दिन बाद we'll have a message on our desktop that demands any ransom payment in Bitcoin. So उस समय हमें पता था कि ये एक साइबर अटैक है, तो हमने उसको कोई नहीं किया और हमने अपने सिस्टम को जस्ट आइसोलेट कर दिया फ्रॉम ऑल द सिस्टम्स. और हमने उस सिस्टम को फिर जनरली क्या किया, उसका बैकअप जो हमारे पास था वो था और हमने फिर उसको रीसेट किया. सो ये रैंसमवेयर के साथ हुआ, ये 2017 में हुआ. उस समय इसका कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन उस समय अवेलेबल नहीं था. ओके, बट नाउ इट इज देयर इज अ वेबसाइट that is no more ransom. That is no more ransom, I think. No more ransom. So you can see here a lots of ransomware extension here. So these all are you can see Lucifer, Astrolocker, Target Company, Nove. So these all are extensions. So if you click on that, okay, so this website gives you the solution to any ransomware. Okay, so in case your system is infected with any random ransomware, you can just log on to the website and check about ransomware. But it is a very basic technique. अगर आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है किसी रैंसमवेयर से, देन प्लीज इंस्टेंट उसी समय उस सिस्टम को आप आइसोलेट कर देंगे नेटवर्क से और उस सिस्टम को किसी भी नेटवर्क में नहीं रखेंगे. ओके,
और उस नेटवर्क के बाद उस सिस्टम को आप रीसेट कर लीजिए, उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, और फिर अपने जो भी आपका नेटवर्क है आप प्रॉपरली उसको भी रीसेट करेंगे. दैट इज ऑल अबाउट द रैंसमवेयर. Okay. Now, eBay. We all know eBay is a e-commerce website. So e-commerce website has multiple users data. Okay, as we have put our very very common information like name, uh, password, or date of birth or email ID on that website. So eBay data is also compromised. So you can say here 145 million users data is compromised. Okay. Heartbleed. Okay. And even SBI in this list also. So this list is very long. Okay. And Flipkart, the SBI account compromised, 6 lakh cards blocked, malware. Flipkart CFO Binni Bansal email hacked, 3.3 millions Indian debit card compromised, Sony Pictures. So that list is very long and going on. Okay. So there are various cyber attacks happen in last decades, or you can say very years. And in 2018, Cosmos Bank Pune, that was the major cyber attack happens in this era. Major cyber attack happened in this recent years. Okay, so we have a case study of Cosmos Bank cyber fraud. So we will discuss that case in our offline session at our institute. Okay. The cyber world damage and opportunity. It is obvious है कि अगर साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तभी इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है. तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी एनालिस्ट और सिक्योरिटी कंसल्टेंट की भी ज़रूरत रहेगी. तो ये बेसिक्स है. ओके, नाउ these are the technical terms. Types of cyber threats. Okay, types of cyber threats. What are the threats? So in this list, first is malware, that is, then ransomware, then social engineering, then phishing, insider threats, DDoS, man in the middle attack. Okay, so what are the cyber threats? तो cyber threats कि कई टाइप्स हैं, उसमें हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स? malware. So malware is a malicious software. Okay, so malware is a form of malicious software in which any file or program can be used to harm computer users. That include worm, virus, trojan, and any spyware. Okay, so if you installed any kind of cracked software or any kind of software which is taken by any unauthorized website, so that will be a cause of malware, and that malware will harm your system seriously. Okay, that infect your system or compromised all your information and send all of your data to the hacker directly. Okay, I will show you the detailed demo of that malware. In that demo, we will create a malware and send to our victim system, and when the victim is clicked on that malware or click and open the PDF file or open the music file, that his or her system will compromised, and we have all of the information of that computer system in our computer system. So that is the malware. Okay, so this includes worms, virus, trojan, and spyware.
We will discuss in details in our next lecture about worms, what are the worms, viruses, trojan and spyware. Okay, but फ्रॉम टुडे आपको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए कोई भी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर सिस्टम में, बिकॉज क्रॉक बिकॉज एक क्रैक जो सिस्टम होता है, एक क्रैक जो सॉफ्टवेयर है, उसके साथ एक कीजन आएगा, एक कीजन सॉफ्टवेयर आएगा, और कीजन के साथ जैसे आप अपनी कीज मैच करते हैं, ओके, सो यू नेवर नो कि एक स्पाईवेयर भी आपके कंप्यूटर में उस कीजन के साथ और उस सॉफ्टवेयर के साथ आ सकता है जो आपके डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर रहा होगा. ओके, so that is the malware. Then ransomware we have discussed. Social engineering. So social engineering is very common and very effective attack in cyber world. Social engineering is an attack that relies on human interaction to trick user into breaking security procedure to gain sensitive information that is typically protected. Obviously, that the सोशल इंजीनियरिंग अटैक में आप क्या कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि आपने सुना होगा, काफ़ी टाइम्स में सुना होगा कि आपको एक कॉल आ रहा है. एसबीआई ने भी इस वीडियो को रिलीज़ किया है कि आपको एक कॉल आ रहा है कि हाँ, आपका जो एसबीआई डेबिट कार्ड है वो एक्सपायर हो रहा है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपका कार्ड का डिटेल्स बताना पड़ेगा, उसके नंबर्स यू हैव टू टेल मी व्हाट इज़ योर एक्सपायरी डेट, व्हाट इज़ योर सीवीवी नंबर, ओके, एंड उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, वो आप मुझे बताएंगे, तभी आपको एक नया कार्ड इश्यू हो जाएगा. सो अगर आप अवेयर नहीं हैं देन आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर देंगे, अगर आप अवेयर हैं तो आप उस फोन को डायरेक्टली कट कर देंगे. सो दैट इज द अटेम्प्ट ऑफ अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक. ओके, एंड फिशिंग इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक. सो फिशिंग अटैक्स आर वेरी इफेक्टिव अटैक्स इन साइबर वर्ल्ड. ओके, phishing is a form of social engineering where fraudulent email or text message that resemble those from reputable or known sources are sent, often random attacks. The intent of these messages is to steal information such as credit card login information. Phishing. Okay, so you can say in phishing attacks, a very similar page of your bank account, like PNB or any SBI, okay, and hacker sent you that page, and you just enter your email and your username or your password, and that information is not sent to that bank server, that information is directly sent to that hacker. So ये ऐसा काफ़ी टाइम्स हुआ है कि मतलब आपके साथ जो फिशिंग अटैक्स हैं वो इतने सक्सेसफुल इसीलिए हुए हैं क्योंकि हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा अभी एसबीआई योनो के साथ हुआ लास्ट ईयर में. एसबीआई योनो जो ऐप है उसका एक केवाईसी फॉर्म बनाया गया और उसको डायरेक्टली यूजर्स को सेंड किया गया कि आपका जो केवाईसी जो योनो है, एसबीआई योनो, वो केवाईसी के रिक्वायरमेंट है उसके, सो प्लीज़ क्लिक ऑन दैट लिंक. आप जैसे उस लिंक पर क्लिक कर रहे हैं वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है, योर नेम, योर एड्रेस, योर कार्ड डिटेल्स और योर बैंक डिटेल्स, और वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली बैंक के पास नहीं जा रही है, दैट इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू द हैकर्स. सो ये एक फिशिंग अटैक का है, एंड मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा. काले लिनक्स में हम फिशिंग पेजेस बनाएंगे, हम स्पॉटिफाई का, हम इंस्टा का, हम फेसबुक का, हम इन सब के फिशिंग पेजेस बनाएंगे और डायरेक्टली सेंड करेंगे एक दूसरे को. वहाँ पर हम देखेंगे कि हम भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं और हम अपने जो इन्फॉर्मेशन है, यूज़र नेम और पासवर्ड, वो डायरेक्टली क्या कर देंगे? लीक कर देंगे और वो डायरेक्टली हैकर को एक्सेस मिल जाएगी. सो ऐसा रियल में हो रहा है, बट नाउ हम थोड़े अवेयर हो गए हैं तो हम इस टाइप के अटैक से थोड़ा थोड़ा बच रहे हैं, बट मोस्ट पॉसिबल जो मोस्ट इफेक्टिव अटैक्स हैं वो यही हैं. नाउ insider threats. So insider threats are security breaches or losses caused by humans, for example employees, contractor or customer. Insider threats can be malicious or okay. DDoS attack, we all know about DDoS attack, distributed denial of service. Okay.
Distributed denial of service attack. Mean to say, when your server denies you to serve, that is simply called denial of service. Mean to say, you want to log in any website and that website is not open. So that is called distributed denial of service. अब ये होता कैसे है, इसके पीछे रीजंस हैं बहुत सारे. समटाइम्स आप की कोई राइवल कंपनी है, उसकी कोई वेबसाइट है, आप उसको, उसके बिजनेस को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आप डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक को परफॉर्म करवा सकते हैं. टेक्निकली अगर हम बात करें ना, तो ये बहुत पॉसिबल है. बिकॉज होता क्या है कि डार्क वेब पे, डार्क वर्ल्ड में बॉट्स आपको मिलते हैं, जिनको आप बॉट आर्मी कहते हैं. अभी बॉट्स क्या होते हैं, अभी नई टर्म आ गई, बॉट्स क्या होते हैं. सो व्हाट आर द बॉट्स? बॉट्स बेसिकली क्या है कि आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड यूजर सिस्टम्स हैं. इनटू से कि वो कोई ह्यूमंस नहीं है, वो नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम है जिनको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है. ओके, और वहाँ पर पूरी पूरी बॉट आर्मी मिल रही है, पूरी पूरी बॉट्स मिल रहे हैं. एक यूज़र जिसको किसी को नुकसान पहुँचाना है, वो डार्क वेब में जाता है, कुछ बॉट्स को परचेज करता है और ये कहता है कि एट 12 PM you have to shoot that website or shut down the server of that website. So वो एक सेकंड में वो सारे बॉट्स, मिलियंस ऑफ बॉट उस एक सर्विस की रिक्वेस्ट करेंगे उस वेबसाइट पे, और जहां से वो हमारी वेबसाइट का अगर सर्वर स्ट्रांग नहीं होगा तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा और आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड द डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक एंड मैन इन द मिडिल अटैक. एंड दिस अटैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिकॉज हम देख रहे हैं अपने आसपास कि हमें फ्री वाईफाई मिल जाता है इजीली, और हम फ्री वाईफाई को एक्सेस कर लेते हैं. कहीं भी हम एक ओटीपी, हमें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर रहे हैं, एक ओटीपी आ रहा है एंड वी हैव एक्सेस दैट फ्री वाईफाई. बट मैन इन द मिडिल अटैक मीन्स कि अगर एक हैकर बंदा भी उसी नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है और उसके पास अपनी कुछ टूल्स हैं. एक टूल होता है बेसिकली एंड्रॉयड फ़ोन के लिए यूज़ होता है जेंटी. तो जेंटी एक टूल है जिसमें आप अपने नेटवर्क में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को ट्रेस कर सकते हैं. दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मैन इन द मिडिल अटैक. मीन टू से, आई एम द नॉर्मल यूज़र, मैं आता हूँ, अपना नॉर्मल काम कर रहा हूँ, नॉर्मल जो भी मैं सर्व कर रहा हूँ, बट एक अटैकर मेरे साथ बैठा हुआ है और वो अटैकर अपने उस टूल के ऊपर मेरी सारी एक्टिविटी ट्रेस कर रहा है. तो ये एक नॉर्मल यूज़र के लिए तो ठीक है कि हाँ वो कुछ नहीं कर रहा है, बट अगर आप उसी फ्री वाईफाई से एक पेमेंट भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है. सो ये जो है, अब ये ऐसा नहीं है कि ये फ्री वाईफाई के साथ भी हो रहा है. जनरली मैं भी ऐसा करता हूँ कि मैं अपने हॉटस्पॉट को या अपने वाईफाई को पासवर्ड उसका रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि जब मुझे इस टाइप के अटैक को देखना होता है तो मैं भी ये पूरा डेटा देख पाता हूँ. तो ऐसा रियल में हो रहा है. दैट इज कॉल्ड द मैन इन द मिडिल अटैक. So we will discuss this attack in details in our offline sessions. Okay. Other very common attacks are botnets. Okay. Drive-by downloads and SQL injection. So these are the attacks. Dangerous cybersecurity myths. Now, these are very important to know. Cyber criminals are outsiders. First of all, these are the very basic myths. Cyber criminals are outsider, maybe insider. ओके, कोई भी नाखुश एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई भी आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई आपका नेबर भी हो सकता है जो आपके वाईफाई को उसने हैक कर लिया हो और आपकी एक्टिविटी को ट्रेस कर रहा हो. तो एक मिथ है, साइबर क्रिमिनल्स आर आउटसाइडर्स. तो इन मैनी टाइम्स दे आर आउटसाइडर्स, बट इन सम टाइम्स दे आर इनसाइडर टू. रिस्क आर वेल नोन. ऐसा कभी नहीं होता रिस्क आर वेल नोन, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज this is the updated world. Everything is updated day by day. Okay, my industry is safe. That is the biggest myth in this cyber world. Okay, my industry is safe. So nothing, no one is safe from the cyber attacks. Okay, attacker vectors are contained. So you have to be aware, you have to gain information about the cyber attacks that will secure you from the cyber attacks. The cyber security goals, basically
The objective of cybersecurity is to protect information from being stolen, compromised, or attacked, as we discussed. Okay. So these three points: protect the confidentiality of data, obviously, protect the integrity of data, promote the availability of data for authorized user. So this is the CIA tried. Confidentiality. Okay. So what is confidentiality? It is very common. Keeping things that are meant to be secret means secret. If anything is secret, that is सीक्रेट। ओके, अगर एक इंफॉर्मेशन दो लोगों के साथ शेयर होनी है तो वो इंफॉर्मेशन दो ही के साथ शेयर होनी चाहिए। नो नो अदर पर्सन कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, सो कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करने के लिए टूल्स कौन से हैं आपके पास? दैट इज एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन। दीज आर द टूल्स। Integrity. Integrity means keeping information accurate. Accurate means information should not be altered, modified or edited. Okay. Suppose आपने कुछ मैसेज सेंड किया और वो मैसेज अपने आपके रिसीवर को पहुंचते पहुंचते वो मैसेज कुछ का कुछ हो जाता है। व्हाट्सएप में आप देख रहे हैं तो व्हाट्सएप shows you that your message are encrypted. ओके, मीन टू से वो सिक्योर, वो बिल्कुल आपको श्योर कर रहा है कि आपको जो मैसेज है ना, वो जो आप हेलो भेज रहे हैं तो वो हेलो ही उस साइड जा रहा है, अगर आप हाई भेज रहे हैं तो हाई ही उस साइड जा रहा है। वो ऐसा नहीं है यूडीपी प्रोटोकॉल की तरह कि आप हेलो बोल रहे हैं वॉइस वीओआईपी के थ्रू, मतलब जब आप कॉल कर रहे हैं हेलो बोल रहे हैं तो उधर कुछ और सुनाई दे रहा है, या हेलो माय नेम इज अजय मैंने बोला तो हो सकता है कि रिसीवर को उधर क्या सुनाई दिया हो, खाली अजय सुनाई दिया हो। तो ये एज सच ऐसा नहीं है। इंटेग्रिटी का मीन है सिंपल सा आपको कि आपकी इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी ऑल्टर्ड। अवेलेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, अवेलेबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू इंश्योर सिस्टम रिमेन अवेलेबल एंड फंक्शनिंग। आपका जो सिस्टम है वो जिसको अलाउड है, जो रिसोर्सेज जिसके लिए अवेलेबल हैं उसको वो अवेलेबल ही रहेंगे। ओके, नाउ इन द लास्ट साइबर सेफ्टी टिप्स, अपडेट योर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, अब तो विंडोज़ बहुत ज़्यादा एडवांस है कि वो आपको बार बार सिक्योरिटी पैचेस दे रहे हैं। ओके, सो यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बट नॉट ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर। ओके, नॉट ट्रायल वर्जन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यूज़ अ फुल फ्लेज्ड licensed antivirus software. Okay, use strong password. Okay, some passwords are 123 passwords, or your date of birth are not secure password, so you have to use a very strong password. Okay, so you can say, you can check how strong your password, no? How strong is my password? Sorry, how secure my password is, ये होता है how secure is my password. This is the website. Okay, this tool is okay. Now you can suppose my name is Ajay, so if I type Ajay, it would take a computer 11 microseconds to crack your password. Then I use @ 2 millisecond, then I use 1 2 3, it's 19 minutes, and then I use a special symbol dollar, then 16 hours, and if I use again a capital word, then it is 5 years. So you can see here, if you put your password in alphabets only, then it is very easy for a hacker to crack it. So please use the strong password.
Okay, do not open email attachment from the unknown senders. These are the very common things. Do not click on the links. Obviously बात है, कभी click नहीं करना चाहिए जब तक हम जानते ना हो. Avoid using unsecure Wi-Fi and network in public places. Okay. Now, the golden fact. It is impossible to provide 100% security to a system. Obvious है कि आप 100% security provide नहीं करा सकते because hacker के दिमाग में क्या चल रहा होता है हमें नहीं पता होता है. If the attacker has determined to break, he will attack and there is nothing and that can be done to completely stop it. Okay. The role of security provider is to make it harder for the attacker to get in the blocking and discovered ways to breaking in the system. So it is very simple. We can say nothing is 100% secure. Okay. So we have to aware about that things. Okay. So this is all about the cyber security. In our next session, we will discuss about ethical hacking and cyber laws. So what is ethical hacking and what are the cyber laws in India? So let's take a 10 minutes break, and after break we will discuss about what is ethical hacking. So please available after 10 minutes.